These fields could have been lush with organic vegetation, but crores of rupees for this project were swindled and the green dream died a swift death. 5,000 farmers in various villages in Anuppur district were to receive vermicomposting beds, organic manure, worms, nets, literature and training. Accordingly, a sum of rupees 6.93 crore was allocated from the fund, with rupees 9,770 going to each farmer, covering costs of procuring material, training and soil testing. But there was no training and material provided was inadequate. When NDTV visited villages like Changeri and Baskhali in Kotma block and spoke to the farmers who were supposed to be benefited from the program, the findings were alarming. In Baskhali, the vermicompost beds, which are made of material similar to tarpaulin, were found to be spread out over roofs to protect houses from the rain. हमको नेट का सामान मिला था सर, मतलब दो चीज मिला था, वो नेट और जो केचुला पालते हैं वो मिला था। अब बाकी कुछ सामान नहीं मिला था, बाकी लोगों को सब यही दिया गया सर, दो सामान, बाकी कुछ नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला, न केचुला मिला न खाद ही बना उसका। वो जो कपड़ा वाला नेट है और ये खाद बनाया गया डोंगा मिले है, और हम ये कहें कि तुम खाद बनाया, केचुला खाद, हम केचुला नहीं पाए तो खाद कहाँ से बनेगी। जैसे फिर हम दूसरा जगह से लाए तो फिर जाए खाद बनाए। Other farmers Kamlesh, Sunita, Lalman and Hiralal also echoed the complaints and added that they never received the soil testing reports which would enable them to understand how much compost to use or what crops to grow. खाली पन्नी बांटे थे और हरे रंग का वो, बाकी सामान नहीं मिला है। अब क्या कर किसको दिए हैं, क्या रखे हैं, क्या किए, अपने को नहीं है ये सब आइडिया। In Changeri, farmer Belan Singh Marco said he got no training and the nets and beds were left unused in the fields. पन्नी मिला था और क्या कहते हैं नेट मिला था, तार मिला था, और इसमें खादा बनाने के लिए कचड़ा गोबर कुछ डालते रहे, और इसमें बाकी सामान नहीं बताया गया था, है ना, और केचुला उचला नहीं मिला था, इसलिए वो खाद नहीं बन पाया सही ढंग से, कोई काम नहीं आया। हो गया उसको, फिर वो फट गया, फिर निकाल के अपना डाल दिए इधर उधर। In villages like Gohindra, Pathrodi, Manmadi and Perechua too, farmers reported receiving incomplete material and no training. Former district panchayat member Buddhasen Rathod said he was the first to raise these issues but no action was taken. इन्होंने मात्र जो है 4,000 रुपए का सामग्री दिया और बाकी लगभग 10,000 रुपया प्रति किसान ये हेरा फेरी करके और बंडर बांट कर लिया गया। अब किसानों को पूरी सामग्री नहीं मिला और इसकी हमने रिपोर्ट भी दिया, शिकायत भी किया, लेकिन उसमें जांच भी हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। NDTV tried to get the Deputy Director of the Anuppur Agricultural Department and the Atma Project Director's response by visiting their office, but they were unavailable and did not respond to phone calls. Letters of complaint have reached the Agriculture Department and Economic Offences Wing, but the Minister only learned about it from our questions. अभी कलेक्टर अनूपपुर से बात कर लेंगे और उसकी हम वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कराएंगे और जांच में जो भी दोषी होगा उसको कार्रवाई करेंगे। This scam is not only a betrayal of the farmers but also a setback to the dream of organic farming. The central government had designed this scheme to promote organic farming among the Baga, Saharia, Bharia tribal farmers of 20 districts in Madhya Pradesh. With Vinay Tiwari in Anuppur, in Bhopal, Anurag Dwari for NDTV.